Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this edition of Market Mantra, the program which gives you a complete roundup of all the economic news of the day. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं एस रंगाभाष्यम। Thank you, Manoj. The top stories. Key domestic stocks witnessed fresh record closing highs for the fourth consecutive session. The rupee closes at 82 rupees and 2 paise against the US dollar. Global share markets trade mixed, and Brent crude rises more than 1.5% to $75.90 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में जारी लिवाली से लगातार चौथे कारोबारी सत्र में एक और नई ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुए प्रमुख सूचकांक। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 82 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में दिखा आज मिला जुला रुख, और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य 1.5% से अधिक बढ़कर $75.90 प्रति बैरल पर पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार में लगातार चौथे सत्र में आज नई ऊंचाई पर पहुंचते हुए हमने घरेलू प्रमुख सूचकांकों को देखा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पहली बार 65,500 के स्तर के नजदीक बंद हुआ है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 19,400 के स्तर के पास पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 274 अंक या 0.42% की बढ़त लेकर 65,479 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 66 अंक यानी 0.34% बढ़कर 19,389 दर्ज हुआ। हालांकि विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां पर थोड़ा सा अलग रुख था। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.22% की गिरावट हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुआ। Well, as Manoj just mentioned, it was another wonderful day at Dalal Street. The key domestic share indices today witnessed fresh record closing highs for the fourth session in a row. The BSE Sensex finished near the 65,500 mark, while the NSE Nifty settled near 19,400 level. Both stocks added amid mixed cues from the global stock markets. The Sensex gained 274 points or 0.42% to close at 65,479. The Nifty climbed 66 points or 0.34% to close at 19,389. In the broader markets at the BSE, the mid-cap index slipped 0.22%, while the small-cap index ended almost flat. In the Sensex pack, out of 30 companies, 19 companies moved up, while 11 depreciated. Among the top gainers, Bajaj Finance gained 7.2%, Bajaj Finserv rose 5.8%, and Tech Mahindra climbed 2.4%. On the other hand, Bharti Airtel declined 1.5%. Axis Bank fell 1.2%, and Reliance slipped 1%. In sectoral indices, 11 sectors logged gains while 9 witnessed losses. The IT sector surged 0.8%, followed by financial services, which jumped 0.7%. Tech sector rose 0.5%. On the other hand, telecom declined 1.2%, oil and gas sector fell 0.7%, and energy index slipped 0.6%. The overall market breadth was negative,
as shares of 1,567 companies advanced, while those of 1,945 companies declined. A total of 111 companies, however, remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 82 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 102.99 पर चल रहा था। सुषमा जी, बाजार में लगातार रौनक बनी हुई है और प्रत्येक दिन एक नई ऊंचाई पर पहुंचकर प्रमुख सूचकांक बंद हो रहे हैं। आज के कारोबार को किन अर्थों में ले रहे हैं? देखिए, ये दूसरा दिन है जबकि सेंसेक्स रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया है और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में काफी सारा पैसा लगा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल में जो डेटा है कि जून के अंदर 2.9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है FIIs का, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, और ये एक रिकॉर्ड है। लेकिन इससे पहले जो हाई था वो दिसंबर 2020 में था, जब 2.5 लाख करोड़ के करीबन FPIs ने हमारी स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट की। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स, इसमें हमारी जो इकोनॉमी है उसमें फेथ दिखा रहे हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। अब क्यों फेथ दिखा रहे हैं हमारी इकोनॉमी में? क्योंकि काफी वजह है। डोमेस्टिक जो इंडिकेटर्स हैं, फंडामेंटल्स के जो इंडिकेटर्स हैं, बहुत ही इस वक्त बढ़िया है। पहले तो देख लीजिए कि अभी रिकॉर्ड GST इन्फ्लोज हुए हैं जून में। उसके बाद मॉनसून हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही एक अहम इंडिकेटर है। और हालांकि इतने साल हो गए और लोग समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अहम, उसकी एक अहम स्थिति है और सर्विसेज की भी अहम स्थिति है, लेकिन फिर भी मॉनसून के बिना, अगर मॉनसून अच्छा नहीं होता है तो डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो उभर के आती है। तो मॉनसून की जो स्थिति इस वक्त है कि मॉनसून रिवाइव हो गया है, कुछ डिले हुआ था आने में, लेकिन अब पूरे देश भर में मॉनसून फैल गया है। इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि जुलाई में भी मॉनसून नॉर्मल रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो फसल है इस साल की समर क्रॉप, वो ठीक रहेगी। तो इससे बहुत मतलब अच्छे इंडिकेटर हैं पहले मॉनसून का। दूसरी बात ये है कि अब मैंने GST की बात की, अब उसके बाद जो इन्फ्लेशन है हमारे देश में, बाकी अगर आप देखें डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी, यूरोप में, अमेरिका में, वहां पर अभी भी इन्फ्लेशन के ऊपर पूरा काबू नहीं पाया गया है, लेकिन हमारे देश में 4% के करीबन फिर भी आ गया है। और हमारे सेंट्रल बैंक ने जो अग्रेसिव रेट हाइक्स बाकी देशों में थी वो भी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उसके ऊपर एक रोक लगा दी है और वो इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी आगे की स्थिति क्या होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, ये जो इन्फ्लेशन की को कम करने की जो बात है। और एक और बड़ा फैक्टर है जिससे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे देश में पैसा लगा रहे हैं, वो कि जो अभी कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही हैं पिछले एक महीने से, वो भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। तो ये सारे डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर आप देखें ग्लोबली, ग्लोबल क्यूज भी इस वक्त पॉजिटिव हैं। स्टॉक मार्केट्स ग्लोबली, हालांकि मैं बता रही हूँ कि इन्फ्लेशन बाकी देशों में हाई है, लेकिन ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स बुलिश तरीके से चल रही हैं। अगर आप US देखें, अगर यूरोपियन मार्केट देखें, जापान देखें, तो वहां पर बड़ा बुलिश ट्रेंड है। तो ये भी ग्लोबल क्यूज की वजह से भी हमारी स्टॉक मार्केट में जो आपने कहा रौनक हो रही है, वो चल रही है। Yeah, and Sushma, let's also try and see the fine print. You know, the Sensex today moved up by 0.42%. The Nifty, which is a wider index, moved up by 0.3%. And on a day when the Sensex and Nifty creates a new high, we see that the mid cap has actually slipped.
by 0.22%, and small cap has ended flat. Also the market breadth has been on the negative side. So what would you say that is this movement, very selective and in a couple of stocks of Sensex and Nifty only, and not, a really secular move upwards? No, I still think that this is a fairly significant movement upward. The mid cap and small cap stocks may be a little slower right now, but I think they will also catch up because there's a general mood, sentiment in the market towards positive economic growth. And of course, you are right, it's the big cap because, you have things happening like the merger of the two HDFC banks, which has created quite a stir in the financial sector, and where you have seen the financial sector stocks really rising dramatically. The automobile sector is rising once again because of really very good performance in terms of sales. So yes, it is true that the larger caps are leading the way, but I think you will see that the mid cap and the small cap will catch up very soon. Yeah. But what would you say? Do you think, although it's a difficult call, but do you think that the markets have kind of hit the ceiling for now, and sooner or later, profit booking will catch up and bring the indices down? Yes, to some extent that is true because, profit booking is going to take place once this always happens, as you are well aware, that once the market reaches record levels of highs, there's always a phase where profit booking takes place and you will see some cooling down of the market. But given the fact that foreign institutional investors are still pouring money into the Indian stock market, I think in the longer term you are going to see the bullish trend continuing. सुषमा जी, हम आपका ध्यान अभी जो आपने चर्चा की मॉनसून की तरफ की, मॉनसून के मोर्चे पर अच्छी खबरें आ रही हैं। पहले आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि अल नीनो प्रभाव से शायद असर कहीं व्यापक देखने को मिले, हालांकि फसल का उत्पादन उसमें भी कहा जा रहा था कि ठीक ठाक ही रहेगा। अब जबकि मॉनसून के अच्छे संकेत आ रहे हैं, तो एक शॉर्ट पीरियड को देखते हुए, यानी 3 से 4 महीने की अवधि को ध्यान में रखकर यदि हम विचार करें, तो दिवाली के आसपास तक मॉनसून के प्रभाव से किन किन क्षेत्रों में आपको लग रहा है कि वहां अभी के लिए निवेश करना बेहतर होगा, और बाजार की जो गति जा रही है उसमें कौन कौन से क्षेत्र अधिक लाभप्रद साबित हो सकते हैं इस अवधि के लिए हमारे आम जो निवेशक हैं, छोटे कह लें जो निवेशक हैं, खुदरा निवेशक हैं, उनके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मॉनसून की जो स्थिति है, अभी हमने देखना है, अभी 2 महीने हैं जुलाई अगस्त में, और एल नीनो का इफेक्ट अभी भी आ सकता है। हालांकि आईएमडी ने कहा है जुलाई, कहता है कि जुलाई में तो नॉर्मल होगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं फॉरेन मेट्रोलॉजिकल एजेंसी से कि भाई एल नीनो का असर होगा, तो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा मॉनसून की तरफ। हाँ, दूसरी बात यह है, जिन जिन क्षेत्रों में आप कहते हैं कि निवेश करना बेहतर होगा, वो तो जाहिर ही है। पहले तो आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो मतलब बिल्कुल ही पॉजिटिव तरीके से चल रहा है अभी से नहीं, कई दिनों से। और जैसे मैंने कहा, अभी जो खबर आई है एचडीएफसी की जो मर्जर है, उससे और भी फाइनेंशियल सेक्टर में तेजी आई है। और दूसरा, ये ऑटोमोबाइल स्टॉक्स जो है वो बड़े अगेन उनका बड़ी बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेल्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। और तीसरा, अगर आप देखें आईटी स्टॉक्स की जो अभी इस वक्त आउटलुक जो है ये बहुत अच्छी है। अभी जो प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, वहां पर जो उनके फैसले हुए थे, समझौते हुए थे, उसमें कई चीजें हैं जिससे आईटी सेक्टर को काफी बेनिफिट आएगा। एक तो H1B वीजा की जो रिन्यूअल की बात है वो आसान हो जाएगी, और दूसरा ये जो हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर जो एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर भी जो समझौते हुए हैं उनके ऊपर असर होगा। तो आईटी सेक्टर भी मेरे ख्याल में इसमें बहुत पोटेंशियल है।
Yeah, Sushma, you spoke about the monsoons. As far as the IMD is concerned, the Indian Meteorological Department, they have given a projection that, monsoons, the southwest monsoons would be, somewhat 96-97% of the long period average LPA which they talk about. So, expected to be near normal. And 2 days back, we also got the news that the entire country has been covered by the monsoon. If everything goes ahead as expected, can we expect some of the sectors which are kind of directly linked to the monsoons, like say the FMCG sector or the two-wheeler sector, agri sector, all these to benefit from the good monsoon? Yes, of course. As I said, again, we need to be slightly cautious about this. You are absolutely right. The IMD did state about 2 days ago that the entire country has been covered by the monsoon, and it has been covered earlier than usual. Yeah, almost a week earlier. Yes, it has been covered much earlier. So that's really very good news. But given the fact, as I said, that the reports of El Nino is coming from abroad, therefore we have to be a little cautious. And also the fact is that climate change has had a great impact on the monsoon, on the impact of the monsoon, the spread of the monsoon. I mean, for instance, you can see in Delhi itself, we have had a June which has had so much of rain, which is extremely unusual. And that, of course, is actually not very good for the crops at this time. But anyway, it is early. This is the sowing season, so the rest of the, season is going to be good. The required rainfall has come. So coming to the areas, yes, the direct impact, you are right, direct impact is from of a higher demand in the monsoon is, of course, the FMCG sector. And in rural areas, of course, two-wheeler demand. Now, two-wheelers is an area among automobiles which has not been doing as well as four-wheelers or as well as commercial vehicles even. Two-wheelers has been lagging behind. Yeah. Hopefully, if the demand, goes up after the monsoon, we have a good harvest, good crop, then we will see the demand for two-wheelers rising, commensurate to the rest of the automobile sector. Right. Let's move on and take a look at some of the other news items as well. Finance Minister Nirmala Sitharaman today chaired a review meeting on the implementation of various announcements made in this year's union budget. According to the Finance Ministry, the Finance Minister underlined the importance of continuous assessment of progress to ensure that various announcements are implemented in a time-bound manner. Senior officials of the Finance Ministry, Corporate Affairs and Department of Investment and Public Asset Management have participated in the meeting held in New Delhi. Very briefly, Sushma, we are talking about, the implementation of the budget announcements in a time-bound manner. The Finance Minister herself, reviewing the entire implementation process. Something which has come recently in the news is the liberalized remittance scheme, which has been taxed. The credit card usage of, credit cards abroad have been taxed. But banks have, come up with an apprehension that it might not be easy since they have to update their software and take it forward. So, do you think, there could be problems in pockets where, these things have been announced, but at the ground level, it is somewhat, difficult for the banks, financial institutions to actually implement it? See, the news that has been coming about this in the last, week or so is actually that perhaps the Finance Ministry has decided to put this whole proposal into what they call cold storage. Oh. Given the fact that, as you pointed out, that banks have talked about the problems of implementing it. And then even earlier, as soon as it was announced, that the tourism industry actually protested that this is going to be, disincentive for people to go abroad and to spend money abroad if they're going to be taxed in this way. And then, of course, the banks pointed out the technical difficulties in all this. So I think there has been a rethink on this issue in the Finance Ministry, and I'm going by the newspaper reports actually, and they are actually suspending this whole proposal for the time being.
and putting it, as they say, into cold storage. It has not been withdrawn, but it has been the implementation has been suspended for the time being. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारत ने वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं का निर्यात दोगुना कर दिया है। 2005 में यह निर्यात 2% था, जो कि 2022 में बढ़कर 4.4% पर पहुंच गया है। विश्व व्यापार संगठन के रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट का शीर्षक है विकास के लिए सेवाओं में व्यापार। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में सीमा पार सेवाओं के निर्यात से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी नौकरियां कुल सेवा क्षेत्र की नौकरियों से 10% अधिक हैं। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों के रोगी और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे विकासशील देशों के मरीज भी कम लागत तथा उच्च गुणवत्ता के उपचार के लिए भारत आना पसंद करते हैं। यहां पर आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। जो कमर्शियल हमारी सेवाएं हैं, उनका निर्यात दोगुना बढ़ा है इस फिलहाल की अवधि में। ये क्या दर्शा रहा, किन क्षेत्रों में कह लें कि वाणिज्यिक सेवाओं के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आ जाती हैं जिसका लाभ, जिसमें निर्यात में हमें कह लें कि बढ़त मिली है? ये देखिए, पहले तो आपने बात की, एक तो मेडिकल टूरिज्म की जो बात है जी, बहुत सारे लोग हमारे देश में आना चाहते हैं, हमारी जो सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज, हमारी मेडिकल सर्विसेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज की बात देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी काफी स्कोप है। और सबसे बड़ी चीज जो हम सबको पता है वो इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर में जो कंप्यूटर के जरिए जो डिजिटल सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज हमारे देश में सबसे बड़ी मतलब पूल ऑफ मैन पावर हमारे देश में है और स्किल्स भी हैं। तो यही बहुत बड़ी चीज है जिससे हम जो हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ गई हैं। इनफैक्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें तो उसके मतलब 50% को इतना के करीब हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी हैं। और वो भी उसके अगर आप टोटल मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट देखें तो वो बहुत बढ़ गया है। तो सर्विसेज में हमारी काफी स्ट्रेंथ है, मजबूती है और इसमें यहाँ पर नौकरियां भी मिलती हैं। और मेरे ख्याल यही जो मैंने कहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेडिकल टूरिज्म और आईटी सर्विसेज, ये हैं ब्रॉडली जो सर्विसेज हमारी जिसको हम निर्यात करते हैं इस वक्त। Yeah, and Sushma, we are talking about foreign trade, exports and import. Let's also, briefly touch upon the rupee-dollar equation. The rupee being at around, 82 rupees to a dollar. Just a couple of months back, it was moving towards the 85 rupee, mark, and there were apprehensions big time that, it could move towards the 90 rupee to a dollar. But thankfully that didn't happen, and we have seen in the last couple of months that the rupee has been really stable at this band of 82 rupees to 81, 82 rupees to a dollar. Isn't that heartening that the rupee is actually stable? Yes, it's heartening, especially from the point of view that we are importing large quantities of crude oil. And to that extent, the oil import bill has not gone up as much as it could have if the rupee had depreciated further. The second thing is that the rupees, the movement is affected by the economic indicators. One of the major ones, for instance, is the current account deficit. Now, the current account deficit last year was at a very worrying state. It has now improved considerably. So that has given a lot of comfort. And then if you see in fact, it's interesting that the Reserve Bank at this stage doesn't want the rupee to appreciate too much, because if it appreciates too much, then it affects our exports, the competitiveness of our exports. So they are trying to ensure that the rupee remains stable right now. But this is largely due to the fact that India is now, the sentiment of the rupee is because India is now the fastest growing major economy in the world. And these economic indicators, the sentiments weigh on even on currency movements. आइए आगे बढ़ें, नजर डालें वैश्विक बाजारों पर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है।
निवेशकों की लिवाली से हांगकांग का हेंग सेंग 0.6% लाभ में रहा। उधर बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1% लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.4% की गिरावट हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% घाटे में रहा। इस बीच चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में आज कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.1% ऊपर था। वहीं जर्मनी के डैक्स में 0.2% और फ्रांस के CAC 40 में 0.1% की गिरावट दिख रही थी। Let's move on to the American markets. U.S. stocks ended with slim gains in a holiday truncated session yesterday, helped by a surge in Tesla and strength in bank shares. Trading volumes were lighter than average as the stock markets closed at 1 p.m. ahead of the July 4th Independence Day holiday today. Dow Jones Industrial Average ended in the green but almost flat. S&P 500 added 0.1% and Nasdaq Composite rose 0.2%. Let's take a look at the oil scenario. Crude oil prices today rose more than 1.5% as markets weighed supply cuts for August by top exporters Saudi Arabia and Russia against a weak global economic outlook. In intraday trade, Brent crude was trading at $75.90 per barrel, whereas West Texas Intermediate crude price was at $71 per barrel when reports last came in. Shushma, to talk about the oil prices, the figure which was taken by the Finance Ministry and the Reserve Bank, to make a projection on inflation and the oil was much higher, was probably at around $85 to a barrel, but from there on, the oil prices, international crude oil prices have come down a lot at this level of $75. So that would give a real comfort and cushion to our oil refiners and the marketing companies as well. Absolutely. I mean, no, it's also a great comfort for the Finance Ministry, which is, which has to calculate, think of the fiscal deficit and the oil import bill as for the current financial year, that is 2023-24, if the prices continue this year, could actually be lower than last year, even if you take into account the increase in actual volumes that come in. So this is certainly a great comfort level. And one of the reasons that even though Saudi Arabia and Russia have decided to extend their voluntary cuts in August, then the price is still around $75 or $76. Yeah. And that is, due to the fact that demand is still looking disappointing in the major markets, whether it is Europe, US, or even China. आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य आज अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 190 रुपए बढ़त के साथ 58,465 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 340 रुपए बढ़त के साथ 69,650 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर ध्यान दें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना मजबूती के साथ $1,935.80 प्रति औंस के स्तर पर चल रहा था, जबकि चांदी भी मजबूती के साथ $23.20 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you, Manoj. And before we close, a quick look at the top stories. Key domestic stocks witnessed fresh record closing highs for the fourth session in a row. The rupee finishes at 82 rupees and 2 paise against the US dollar. Global share markets trade mixed, and Brent crude oil rises more than 1.5% to $75.90 per barrel. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye and have a pleasant evening. Market Mantra.